Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are discussing comparison between industry, commerce and trade. There are six bases of comparison. First is meaning. Industry. It is an activity which is concerned with production or processing of goods and material. It means in industry we convert raw material into finished goods. Commerce, it includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services, जो हमें हेल्प करती हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं. ट्रेड, इट इज़ कंसर्न्ड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जब सामान को खरीदना और बेचना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड. सेकेंड इज स्कोप. इन इंडस्ट्री इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary industry. We explained earlier there are three types of industry: primary, secondary and tertiary. And in commerce it includes trade and aids to trade. And trade, it includes internal and external. It is also called inland and foreign trade. Third point is capital requirement. In industry we require huge amount of fixed and working capital. इट मीन्स इंडस्ट्री में हमें लार्ज अमाउंट फिक्स और वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज फिक्स कैपिटल? दैट कैपिटल विच वी यूज टू परचेज फिक्स एसेट्स. नाउ व्हाट आर द फिक्स एसेट्स? लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. दीज आर द फिक्स assets. And second is working capital, that capital which we require to fulfill our daily expenses. जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक हमें मंथली सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वी रिक्वायर कैश टू गिव द पेमेंट टू सप्लायर्स, तो दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. एंड इन कॉमर्स वी रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल बट मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कॉमर्स में हम सामान बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ सारी फैसिलिटीज़ देते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि उसके गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तो इसमें हमें फिक्स कैपिटल कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. एंड इन ट्रेड देयर इज़ अ रिक्वायर कैपिटल टू मेंटेन स्टॉक एंड टू ग्रांट क्रेडिट. हमें उतनी कैपिटल, अगर आप क्रेडिट ज़्यादा देते हैं, इट मीन्स इफ़ यू आर गिविंग credit facilities to your customer, then you require more capital. Fourth is risk. In industry there is a high risk, and in commerce and trade there is a comparatively less risk as compared to in industry. Fifth is activity. In industry we manufacture goods and services, and in commerce we distribute of goods and services, and in trade there is a buying and selling of goods and services. Earlier we discussed one topic, classification of business activities, and in business activities there are industry and commerce. These topics we have discussed in detail. Sixth is utility. In industry it creates form utility. Form utility means making the product available for consumption in a form. It means by converting raw material into finished goods which they will used. For example, sugar. Sugar is finished goods and raw material is sugar cane. In commerce it creates place and time utility. Place utility with the help of transportation and time utility with the help of warehousing. And in trade it creates possession utility. Possession utility is the value consumers put on purchasing a product and having the freedom to use the product. Possession utility में क्या होता है कि कस्टमर्स परचेज करते हैं, क्योंकि ट्रेड में क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो कस्टमर वही गुड्स परचेज करेगा जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो दीज आर द सिक्स बेसिस. विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिस वी कैन कंपेयर बिटवीन industry, commerce and trade. I hope you understood this concept very clearly. Thank you, students.